And I did because of you freshers. इतनी भीड़ हो गई। भैया इस ब्लॉक में रुको ना, मैं आ रही हूँ ना पार्सल लेने। चिराग, it's so stressful everything. अरे So... take it easy यार, तुम बहुत स्ट्रेस लेती हो। Take it easy. So did I tell you, amongst us we have a very special guest, Miss Divya Vasudeva, popularly known as RJ Divya, famous for a talk show. Take it easy. In Radio City 91.1. So can you please welcome her with a huge round of applause? This is so good. I loved it. I wasn't ready for Take It Easy, thank you. Already made my day. Thank you guys. What's your good name? Vidisha? Vidisha and Chirag, fantastic. ये बड़ा difficult होता है जो किया है तुमने, पहले prepare करना है. The guest has to be happy, friends have to be happy, teachers have to be very happy. All of them are. Thank you. Is the mic already mine and am I already on? Wow. Hi. Oh, I like it. When I see so many faces, of course, I'm happy. Gauriman, अच्छा लग रहा है आपसे बार-बार टकरा रही हूँ. Thank you. I'll actually make things easier for myself. My name is Divya and ओरिएंटेशन के लिए तो मुझे लगता है कि कोई टॉपिक की ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ ऐसे बोलना चाहिए जिन्होंने मास कॉम पढ़ा है, ज़िंदगी में जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो आगे उसके बारे में थोड़ा बता दो. So that all of you are freshers, right? And you're really thinking that you're here to rule the world. And you also think that you've opted for the coolest course, unlike your friends who have opted for physics honors and BCom honors. हाँ सबको सही लग रहा है. ये सही है. I was talking to sir अभी and उन्होंने मुझसे when I said कि life में one of the students they just asked me a question कि मास कॉम करके जामिया पढ़ के आप रेडियो में कैसे आए थे. And मैंने कहा उससे पहले भी एक सवाल किया जाता था स्कूल में साइंस लेके आप मास कॉम में कैसे आए थे. But I think the problem is that we'll always have questions for whatever we do, and I think it's a good thing. What's more important is we should also have answers. कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और इसके बाद हमें क्या करना है. Usually इसके बाद हमें क्या करना है का आंसर कभी होता है नहीं, but at least we know what we want. So to start with, my name is Divya और मेरी तो वजह से मेरी उम्र का पता नहीं चलता. But I've been working in FM for now very long years. I think तब से जब से आप स्कूल में शायद छोड़ देते हैं. Yeah. So 10 years. I just finished 10 years with Radio City, and tonight is a party. So after this, I go home, change, and go party with the listeners in a club. So it's pretty fancy to sound, and it hopefully would be very nice. Radio has changed over the last 10 years. जब मुझे अगर पूछा जाएगा कि जो हम आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर या जो मास कॉम में हम पढ़ते हैं उसको practically implement करते हैं, हाँ करते हैं. Like when I take sessions with students a little later when you start with your curriculum, और कई बार students पूछते हैं यार ये तो मैम बिल्कुल भी practically लगता नहीं यूज़ होगा. But it's almost like your school. आप बहुत सारे subjects पढ़ते हो ना, 12 साल, 14 साल, 16 साल, and then when you start practicing and when you start working, आप उनमें से कुछ चीज़ें यूज़ करते हो, कुछ नहीं करते. लेकिन आपकी schooling हमेशा काम आती है. And इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, because it is the time of content creators. It is a time of being an influencer. It's a time when everybody wants to be a YouTube star. Remember, we all have a passion. We might not be the brightest content creator, but whatever we have would be the best. And उसमें हम best दे पाएंगे. इसलिए your education is foremost. So these 3 years, probably for some of you will probably go for masters also. पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है. I mean, did I ever dream to be a radio jock? Yes, I did. मुझे रेडियो करना था क्योंकि मुझे रेडियो की दुनिया बहुत अच्छी लगती है. I really think that I can go on and on and on and I can talk about anything for like hours. लेकिन रेडियो पर आकर बिना मुझे देखे अगर मैं आपको एक कहानी सुना सकती हूँ, I think it's extremely powerful. And I think that is okay. How many of you during the COVID downloaded Clubhouse? हाथ उठाओ, अपना ही है भाई. पहले हाथ तो पूरा उठाओ, कॉन्फिडेंस ले जाएगा. You guys have a life, but then Clubhouse took it away. Rest of you who did not download it, not that you missed anything, but Clubhouse जैसे apps ने हमको क्या सिखाया? क्या सीखा हमने Clubhouse से? चलो ये पूछती हूँ. Why was Clubhouse downloaded? Why was it talked about? Interacting with random strangers, having fun.
without knowing their identity. Even though it's not safe, but it's still fun. Unless you're beating them. Yeah. उसके लिए Tinder बहुत है. Which also such boring things now. But yeah. But interactivity, there's no fear of judgment. So a lot of people जिनको क्लबहाउस नहीं पता, एक ऐप आई, ऑडियो बेस्ड ऐप है, वीडियो भी नहीं है. आप आते हो रूम्स में, आप स्ट्रेंजर से बात करते हो, आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स करते हो. सो आई हैव बीन देयर क्योंकि कोविड के टाइम पे ऑफ कोर्स वी वर होम बाउंड, ऑल्दो आई वाज होम ओनली फॉर 2 वीक्स, बट यस वी वर होम. हमें तो बिल्कुल भी आदत नहीं है घर पर बैठने की. और उसमें टॉपिक्स होंगे. सो देयर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, देयर आल्सो पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट नाइट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, फर्स्ट डेट्स, माय फेवरेट टीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. You could enter any room that is of your taste and you can come and talk to people. क्या समझ आया? कि ऑडियो अभी भी इम्पैक्टफुल है. नहीं तो वीडियो चैटिंग के लिए तो बहुत सारे ऐप्स थे. Why is it that we want to talk to people? Why is it कि हम लोगों को दूसरों से बात करना अच्छा लगता है? उसके 2 रीजन ये है कि हम रियल लाइफ में अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से बात नहीं करते. And secondly, we all want to speak and we all want people to hear us. Am I wrong? खाना खाया, लंच किया है? तो नो जोर से बोलो. ठीक है, अब ठीक है. Guys, listen, I have traveled like 2 cities. I've come from Delhi to Noida and Greater Noida. So let's not make it like South Samudra Par is not just a Gana. And these are no jokes. This is my life. तुम्हारे लिए आई हूँ. किसी से भी पूछना, मैं काम करना शुरू करोगे ना, झूठ बोलना सबसे पहले सीखोगे. आज मैं बिजी हूँ, ग्रेटर नोएडा, आज मैं आ नहीं पाऊंगी. सबने गर्दन डाल दी. सब काम करने वाले लोग एग्री कर रहे हैं. Like मैंने अभी बोला, गुड़गांव की यूनिवर्सिटी को मैंने मना किया because I said I want to go and meet my friends, and it's closer. No, on a serious note, the point is that I want these sessions to happen because I personally think मैंने going back to where I was coming from, मैंने graduation किया था मास कॉम में, मैंने उसके बाद post graduation किया जामिया से मास कॉम में, and then because my parents couldn't figure out कि radio career कैसे बन सकता है, so there are a lot of things that we do for our parents also, which I think we should. तो मुझे लगा नेट का एग्जाम भी दे देती हूँ, मैं टीचर बन जाऊंगी ना, मम्मी डैडी खुश हो जाएंगे. एंड गॉड हैज बीन सो काइंड, समटाइम्स एक्स्ट्रा काइंड. मैं चाहती नहीं थी कि वो क्लियर हो, वो पेपर क्लियर हो गया. तो मेरे पेरेंट्स को लगा अब हमारी लड़की टीचर बन जाएगी. बट देन लाइक सिमरन, आई टोल्ड माय पेरेंट्स, कैन आई नाउ डू समथिंग फॉर माय सेल्फ, कैन आई प्लीज ट्राई बीइंग अ रेडियो जॉब, बिकॉज यू नो मुझे रेडियो से बहुत प्यार था. मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, मेरे कान में म्यूजिक चल रहा है, देयर इज समबडी विद मी. आई वाज अ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल. मैंने अपना फिजिक्स, वेव फॉर्म्स, all those things that I studied back in chemistry, which was a nightmare. Chemistry खराब लगती थी मुझको, but ठीक है, we all have our favorites. Maths was brilliant. मैंने पूरे टाइम रेडियो सुना. I also was a listener जिसको रेडियो पे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ आपको ये पता था कि हाँ गलत जवाब दोगे तो जॉक आपसे बातें करेगा, हंसेगा, but like your friends probably वो मजाक नहीं उड़ाएगा. And you know, then you start getting in that thing. Night shows and there's this guy with a very heavy bass voice. You want to hear them, right? Sometimes it's just the voice that creates that happiness for you. So मेरे लिए radio was always that love. And once you start working, you realize कि it is so powerful. उसके ऊपर I'll come in the second half. But the point was that वो करते सब चीजें करते हुए मैं रेडियो तक पहुंच गई. और इसीलिए मुझे लगता है कि ओरिएंटेशन इसलिए जरूरी है, because जब मैं कॉलेज में आई थी and when I was studying, और अभी भी when I go to other places, there are a lot of times जब हम समझ नहीं पाते हैं कि आज अभी एक स्पीकर आएगा, फिर दूसरा स्पीकर आएगा, do I want to be like this person, do I want to do this? In mass comm, especially in journalism today, learn as much as you want, as you can. आपको ये लगता है कि आपको फोटोग्राफी में जाना है, I would say तो फिर 3 साल आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी उतना ही एक्सप्लोर करें, so that 3 साल के एंड पे आपको ये पता रहे कि यार फोटोग्राफी was always my first love, but maybe I'm very good with say writing, and that's what I want to explore. So give yourself that chance. चलो मैं आपसे पूछती हूँ, how many of you hear radio, and if you do, very good, I like it. And ma'am, you know what, आप जितना नोट कर रहे हो, मुझे ये भी समझ आ रहा है that कुछ लोगों के साथ बातें रेजोनेट हो रही हैं. What's a good name? Yes? आशुति. That's a beautiful name. क्या मतलब है नाम का? And why? What is it that you like about radio? Are you from Delhi? Okay. क्या अच्छा लगता है रेडियो में? जो स्कूल में मेरे पेरेंट्स बोलते थे पढ़ लो कितनी बातें करती हो, मैंने कहा आपको पैसे भी वही देते हैं. और जब मैं क्लास लेने आती हूँ और जब बच्चे बहुत बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ लिसन, आई एम गेटिंग पेड टू टॉक, शट अप.
But you should talk when you're asked to, and I'm glad you're answering. Thank you so much. And a beautiful name. Your parents are creative. That's nice. अच्छा और कौन सुनते हैं रेडियो? क्या अच्छा लगता है? What is it? पॉडकास्ट सुनते हो? क्या सुनते हो? उनके वीडियो देखे जा रहे हैं कि सुना जा रहा है? And क्या अच्छा लगता है? What's your name? Krish. Trish. Trish का क्या मतलब है? That's also creative. No copying, no plagiarism. Yes. What is it that you like about the podcast? I connect to it pretty well. ऐसा लगता है कि मैं दो लोगों के साथ conversation कर रहा हूँ. I feel it. So इसके दो reason ये हैं कि maybe the guests also give you something to take home, and the host उसकी भाषा ऐसी है कि आपसे connect कर रहा है. You relate to him, right? And he asks questions that probably you want to ask. Easy. Okay. और कौन? Podcast? You and then you. Yes. Hi. I listen to murder mysteries. Why do you listen to murder mysteries is not my question, but what is it that you like about it? What do you like about the whole audio experience? I don't know, I just like audio. I just listen to them. It's interesting. But कौन सा था मंत्रा वाला? The Bhaskar Ghost. सुना है? See, it's a podcast and we all know it. It's an audio medium, we all know it. Murder mysteries के साथ कभी ऐसा feel किया है that when you hear it, it is more goosebumpish than actually watching a murder story? Yes. Yeah. It's almost like when you write "I love you" to somebody on WhatsApp, because we keep chatting with people, and somebody coming to you and saying it, or probably on the phone, "Listen, I want to tell you something. I love you." What's more impactful? The audio always, in any form, whether it's a clubhouse app or a podcast or your radio, वो आपको हमेशा एक अलग इमोशन देगा. And the most beautiful thing is, सामने वाला उसको अपने अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट कर सकता है. Murder mysteries, crime, grief, pain, जो इमोशंस बहुत डीप होते हैं, उनको ऑडियो में हम और एक्सेलरेट कर सकते हैं. Thankfully to the effects, but also the fact is क्योंकि जब भी किसी चीज़ की आप इमेज देख नहीं रहे हो और इमेज खुद बना रहे हो, it's a proven study कि आप उसको बहुत amplified state में देखोगे. So if somebody is crying, a child is crying here, आप बच्चे को रोते हुए देखोगे, you will feel sorry for the child. But if you can't see the child and you only hear एक बच्चा जोर से रो रहा है, आप सब अलग-अलग इमेज अपने दिमाग में बनाओगे. और उसका impact सब पे अलग-अलग होगा. Somebody would say यार मैं थप्पड़ मार दूँगा, irritating बच्चा होगा बाहर. कोई बोलेगा I don't know why is he crying, is he alone? We all start thinking because we can't see the child. That's the power of audio, and that's the reason why I love the medium, because I think कहने में सबसे आसान है, कैरी करने में सबसे आसान है. IB मिनिस्ट्री में भी had a meeting with अनुराग ठाकुर and we said please ले आओ फोन में. It might be coming back very soon because of Indian Make में रेडियो वापस आएगा. But the thing is that radio is not dying. So a lot of people ask me, will radio die? No, it can't. क्योंकि it is the only medium till date जहाँ पे आप mutually interact कर सकते हो. I get calls. And I think सबसे ज़्यादा rewarding for any media professional would be on the spot आपको acknowledgement मिल जाता है कि आप जो पूछ रहे हो वो लोग सुन रहे हैं. जैसे आप क्लास में आप नोट कर रहे हो, so I'm liking it. At least there are some people who are there with me and I like it. Are you with me? Yes. पीछे वाले बेंच वाले जल्दी आगे आएंगे. मेरी क्लास होती है तो अगली बार आगे बैठे होते हैं. Anyway, podcast में थे और कौन था? There was somebody who yes, hi. You like it because it is high action? No, I like it because of course the voice. It's very calming. Also, it's like so which silence you can hear in the like it's really clear. Yeah. There. Yeah. So, yeah. Silence is golden. So उसमें silence में आपको ये पता होगा कि कब आपको goosebumps आ रहे हैं, कि silence में दिल ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये TV और films में नहीं होगा. I'm sure we watch a film, and that's the reason why a lot of films, a lot of shows उनको रेडियो पे भी रेप्लिकेट किया गया है या पॉडकास्ट पे भी सुन रहे हो. Why do people listen to महाभारत on a podcast? हम तो 100 बार देख चुके हैं क्योंकि उसकी फील अलग आती है. Also with podcast what happens is आपको पता है 20 मिनट सुन के मुझे बंद करना है, लेकिन उस 20 मिनट में आप उसको ध्यान से सुनोगे. Also you can go back and hear it. The keyword for both podcasting and radio, and I think because you guys are really new in this whole world, इसको ज़्यादा complicate नहीं करते हुए छोटी सी exercise कराऊंगी that makes things very easy.
आई थिंक मोइना विल रिमेंबर और मे बी यू वोंट, मैंने MCRC में एक एक्सरसाइज की थी। सईद सर मेरे एक सर थे जो रेडियो पढ़ाते थे, आपके भी थे? तो जामिया में मेरी ये फर्स्ट क्लास थी जब रेडियो मैंने पढ़ा था, एंड आई थिंक मे बी इट्स समवेयर दैट आई रियलाइज दैट हाउ पावरफुल दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडियो इज। अच्छा, रेडियो में क्या क्या सुनते हैं वैसे? व्हाट इज इट दैट यू हियर ऑन रेडियो? व्हाट ऑल थिंग्स डू यू थिंक यू हियर ऑन रेडियो? बउआ, बउआ से मिलना पड़ेगा एक बारी जाके। और which means pranks, मुर्गा प्रैंक्स। सबसे पहले वैसे टेक्निकली म्यूजिक का, एक्चुअली सबसे पहले एड्स। क्या करें यार, यू नो माय फ्रेंड्स टेल मी दिव्या हम घर से निकलते हैं, तेरा गुड मॉर्निंग सुनते हैं, फिर तू आती नहीं है। मैं कहा नहीं, मेरी सैलरी आती है। And the thing is, we are very venue driven. At the end of the day, FM gets us money. Of course, we have hard markers. कितने ads चल सकते हैं? So what is the challenge? The challenge is, imagine 1 घंटे में मुझे म्यूजिक भी चलाना है, मेरे एड्स भी है, और मुझको हर रोज 6 दिन उसी टाइम बैंड में आकर आपसे बात करनी है। सेम डे, a lot of same people and fresh content. हालांकि मैंने उसका भी मंत्रा निकाला है, ऑडियंस नहीं, कंटेंट वही। बट द थिंग इज विद रेडियो कांट इवन डू दैट, क्योंकि मुझे जो कल सुन रहा था वो आज सुनेगा, बोलेगा ये तो कल भी ये बात करी थी। सो इमेजिन हाउ चैलेंजिंग, दैट्स चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2, हाउ इज FM इम्पैक्टफुल? अब मैं FM पे आई हूँ, मुझे हनी सिंह भी चलाना है, बादशाह भी चलाना है, नया गाना है वो भी चलाना है। सो इमेजिन देयर इज अ सॉन्ग लाइक से पागल है पागल है पागल है, और से कौन गर्ल जो भी आया है, और सनक आया है। सडनली विद दोस लिरिक्स, with that mood, I also have to bring in impact because content बहुत जरूरी है। अगर हमने FM पे सिर्फ गानों की बात की और हम चले गए, तो रेडियो तो अपन genuinely जा चुका होता। Why is radio considered very powerful? Because मन की बात क्यों आया रेडियो पे? कुछ पोटेंशियल था। So मुझे ही पता है कि मेरा रेडियो, अगर एक गाड़ी चल रही है उसमें ड्राइवर भैया भी सुन रहे हैं, हो सकता है उसमें कॉलेज गोअर है वो भी सुन रहे हैं, हो सकता है स्कूल चाइल्ड है वो भी सुन रहे हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स भी सुन रहे हैं। इसलिए पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द बीप 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 कंटेंट, बिकॉज मुझे नहीं पता मुझे कौन सुन रहा है, बट दैट्स अ वेरी पर्सनल कॉल, कुड बी डिफरेंट विद यू। लेकिन रेडियो का चैलेंज ये है कि मेरी हर बात को सब समझ जाए। आई रियलाइज दैट द बिगेस्ट चैलेंज इन आवर लाइफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडिया, हम लोग इंडिविजुअली भी जो है, हम कैसे लोगों से कनेक्ट करते हुए हैं। अब आप में से खुद देख लो, घर पे कुछ लोग होंगे जो बच्चों से बहुत अच्छा ट्यून इन कर लेते होंगे, और आप में से कुछ लोग होंगे कि घर में अगर किसी के बच्चे आ रहे हैं तो सबसे पहले छुप जाते होंगे। अग्रीड? और सेम चीज तब होती है जब कोई सीनियर सिटीजन टाइप आ रहे हैं जो चुप नहीं होते। आप में से कुछ लोग उनके साथ बैठेंगे और कुछ लोग उनको देख के भाग जाएंगे। अग्रीड? वेरी ह्यूमन बेसिक नेचर है। मेरे घर का मैं वो इंसान हूँ जिसको मेरी माँ बोलती है बेटा किचन में मत आओ, अब बाहर बैठो। अभी सैटरडे को आई हैड गेस्ट्स, मुझे मेरे को शाम को मेरे पेरेंट्स ने बोला कि यू डिजर्व अ नोबेल प्राइज। आई वाज जेन्युइनली एंटरटेनिंग फॉर 6 नॉन-स्टॉप आवर्स a 7-year-old man and a 7-year-old child, and बीच में उनके और भी जो आए थे 4-5 मेरे भाई बहन। It's an art, but it's natural. Like I don't have to make an effort. This is what I am. I like talking to them. I might get tired. I had गर्म पानी after they left, but ये आर्ट आपको ना रेडियो मैं पढ़ा सकती हूँ, ना जो आपको टीवी पढ़ाएंगे वो, ना आपको मॉड्यूलेशन। It's an art which will now develop in you in these 3 years. How? कितना टाइम हुआ अभी आते हुए कॉलेज? Oh my God, you guys are like little kids. How? So you meet people and you don't judge them. तो अगर कोई गलत प्रोनाउंस करेगा क्लास में, like for example somebody calls रमेश रमेश, there are 2 ways of looking at it. Of course होता है क्लास में हर तरह का, अभी 5 दिन के बाद ये सब आएगा आगे। You correct each other here. For next 3 years, remember this is a project that you're on. क्योंकि इसके बाद once you start working, nobody corrects you, because honestly nobody really gives a, you know, it's a fact. What is important कि आज जब टीचर्स बोलती हैं हमें लगता है क्यों बोल रही हैं। I can tell you one thing, पढ़ने के बाद थोड़ा पढ़ा के और काम करके for like now 12-13 years, टीचर्स याद आती हैं इसके बाद, क्योंकि suddenly they make sense. Suddenly all these things that मेरे वो civics की टीचर was like the strictest back in school, मुझे 6th की बात याद आती है आज, because उस टाइम पे याद नहीं रहता। But this is selective retention, something that you will study once you move towards communication theory. हम लोग वही याद रखते हैं उस पॉइंट पे जो हम याद रखना चाहते हैं। So what you need to do now is be a good storyteller. Storyteller, आप सेल्स और मार्केटिंग की भी जॉब करोगे ना कल, MBA भी करोगे and you go and sell a product for yourself,
there will always be a story. Like अगर मैं आपसे अभी पूछूंगी अपने बारे में बताओ, okay, let's try like this. Anybody whose name, any Divya in the class? निकल ही आती है. श्वेता. Oh my God, ये तो creative parent. Maya, Myra, Ira. Oh God. Okay, one second. Let's try it. Shahrukh. Oh my God, Neha. What word are you landed in? Shreya. I'm not calling her Shreya. I'll call her. Okay, who's Shreya? Who's sitting next? Who's sitting on left to Shreya? Who's Shreya? Any Shreya? Okay, let's try the boys. Any Rajiv? Any Rahul? Any Rohan? I'm leaving the punch. This is insane. Why did the names go Shruti? Swati? Anybody whose name starts with D? Thanks. What's your name? Devanshi? Give me your names. I'm curious. I'm going to do a show on this tomorrow. Disha. Oh yeah, Disha hai. Disha ki. Hanji D. Sir. Dinesh. Danesh. D. Alright, Disha. नहीं Disha नहीं. Devanshi. Alright, Devanshi, stand up. In the names, I forgot the question that I was about to ask. But okay, Devanshi, tell me about yourself. 5 minutes. Hi, my name is Devanshi. And? Alright, this gave examining attention. What I mean to say is, life का सबसे difficult question है. Tell me about yourself. So when people ask me, तुम कितने देर बोलती हो non-stop, etc., 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 I said, challenge कभी भी non-stop बोलना नहीं होता. Challenge बहुत कम time में किसी एक specific चीज पे बोलना होता है. How many of you watched RRR? हाथ उठाने से डरो मत, अपने ही हैं. आपसे थोड़ा कुछ नहीं चाहिए. Okay, sir, देखी थी? हाँ आप. What's your name? सौम्या. मैंने पूछना था सौम्या. ठीक है. सौम्या RRR क्यों अच्छी लगी? 5 lines. और 3 lines हुई हैं. नाटू नाटू अच्छा था. Done. Okay. So basically ना अभी हुआ क्या है like Instagram reels पहले 1 मिनट फिर ये seconds फिर वो seconds suddenly they say that algorithm says कि आप 5 सेकंड में अपनी बात कह दो. ये वो हो गया है. इसलिए लोगों ने अब 10 seconds मूवी रिव्यू शुरू कर दिया. I was watching this review 10 seconds and he said picture. And the thing is, insane number of shares. Why would I share that man on my wall doing this? No, but we are sharing. Now the choice is, do you want to be that man or do you want to do something original? In both the cases, what I like is he did the job in 5 seconds. He did what he had to do. He is getting what he wants. With radio, with podcasts. See, with podcasts what happens is आपके पास time है, लेकिन Indian study के according, I don't know latest क्या हुआ है, but couple of months ago when we realized कि radio लोग 11 मिनट max सुनते हैं at a stretch. 6 महीने पुरानी स्टडी है. और पॉडकास्ट लोग इंडियन एवरेज स्पैन इस वक्त 28 से 29 मिनट आ रहा है, which is a lot. मतलब if you have a 30-minute episode and if you were gripping people, वो plugs लगा के, क्योंकि लोग walk करते हुए भी सुन लेते हैं, drive करते हुए. I listen to podcasts when I'm driving and I like it. तो ये सारी चीज़ों का मेरा मतलब ये था कि आंसर्स रेडियो बहुत चैलेंजिंग है, ऑडियो बहुत चैलेंजिंग होता है. किसी भी चीज़ के ऊपर बोलना, when people ask me about my job, this is my job. So I think, considering I've been doing it for a long time, I have figured out. आप भी कर लोगे. 3 साल में आप बोलना सब सीख जाओगे. You know, welcome to a real world. अपने अलग-अलग कोनों से आए हो आप लोग भी. एक छोटी सी exercise करें to understand how this works. Now that I think is the best place to do it because you don't know each other so well. I'll give you 5 minutes to prepare and 5 minutes to answer. घबराना नहीं है क्योंकि मैं किसी को भी आंसर मांग सकती हूँ because I'm the teacher. Yeah. ये रेडियो है, ठीक है? आप और आपके साथ
साथ जो बैठे आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ सवाल कीजिए. आप दिस इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी गेट अ रिसर्च. हम कुछ भी करने जाते हैं टुडे. इफ आई हैव टू इंटरव्यू वन ऑफ द प्रोफेसर्स हियर जिनसे आप 3 दिन से मिल रहे हो और मुझे उनका इंटरव्यू करना है, तो मैं चाहूंगी कि मैं उनसे पहले ही कुछ 1-2 चीजें पूछ लूं ताकि मैं आपके आगे कुछ नई चीज लाऊं जो आपने अभी तक नहीं सुना. राइट? अब मैं उनसे पूछूंगी मैम बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए या मास कॉम के बारे में बताइए. यू ऑलरेडी नो इट. So what do? I try to read a little about him. I try to probably extract some information from the net. But better yoga, I'll probably catch her outside and I'll say कि अच्छा थोड़ा सा please मुझे बताओगे कि अगला plan क्या है या is there anything special that we're doing for radio or do you have any special plans for kids who are extremely well in dance? कुछ ऐसी specific चीजें जो शायद अभी तक आपको पता नहीं था. Maybe you'll be like wow something's coming. ये अब आपको अपने दोस्त के साथ करना है. दोस्त would be दोस्त, soon to be दोस्त जो भी है. Ask them, you introduce your partner. Language, English, Hindi, Punjabi, जो भी, लेकिन एक ही भाषा रखेंगे. Delivery आप कुछ भी कर सकते हो. You want to do mimicry, you want to say, I say no rhyming क्योंकि रेडियो में rhyming होता नहीं है. क्योंकि rhyming होगा तो सामने वाले को तो पता चल जाएगा ना ये prepare हो क्या है. So you will talk जैसे कि मैं बात कर रही हूँ. So introduce your friend, like for example you will say, आज क्लास में ना टीचर आई थी पूरा white पहन के और बहुत तेज बोल रही थी, curly बाल थे. एंड रेडियो के बारे में बात करी और कुछ याद नहीं आया बट 2-4 जोक मार के चले गए रैंडम. यू नो व्हाट विल हैपन? एवरीबडी आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन विल वन मेक अ पिक्चर. वाइट पहना था, कर्ली बाल थे. इवन इफ दे डोंट नो मी, इवन इफ दे डोंट नो हु द टीचर यू टॉकिंग अबाउट, दे वुड से अच्छा कोई लड़की कट गई और वो बहुत तेज बोल के चली गई. विल रिलेट टू समबडी. सो व्हेन यू एक्सप्लेन योर फ्रेंड, व्हेन यू टेल मी अबाउट योर फ्रेंड, व्हेन यू टेल एवरीबडी अबाउट योर पार्टनर, या तो कुछ फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो सो दैट वी कैन मेक अ पिक्चर. And when you speak about the person sitting next to you, we'll all close our eyes and we'll make that picture. Why? Because एक सबसे पुराना quote यही कहता है that radio is a theater of mind. What we now do in this exercise is create pictures. So I cannot see how Soumya looks. I cannot see how Devanshi looks. The names that I remember. Like for example, the lady with that beautiful name. तो मुझे सिर्फ ये बोलना था. आज मैं क्लास में मिली. Girl had really nice long hair. And मैं नाम भूल गई यार. बहुत मुश्किल था. आशिति. देवी को बोलते हैं. What is the meaning? Sorry, you told me the meaning, right? Yeah, it's the one who makes place in everyone's heart. Makes. Place in everyone's heart. Alright. So that is enough. You know, I met this girl and she had a very nice name. Something that I kept forgetting. But वो लोगों के दिल में घर कर सकती है. उसके नाम का मतलब ये था. What happens is, you know, after this, एक रेडियो प्रोग्राम में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी 3 घंटे की बात लोग याद रखें? नहीं. लेकिन अगर आज मुझे कोई सुनने के लिए आए तो वो कुछ याद रखे जाए so that he comes back to work. So even if I don't know this girl and if I remember अच्छा ये नाम है, मुझे क्लास का जब मैं चली जाऊँगी ना, you know I went to this university, I had this session, I met this girl who had a really nice name. I met this guy, he spoke such nice thing about RRR, मुझे ना आज गाना चलना है. That recall only purely by your words is magic. That's what radio does. That's what podcast also does. Why are people spending so much money on podcasts? Spotify has been one of the biggest spenders on podcasts. Why? क्योंकि लोग कहानियाँ सुनना चाह रहे हैं. और अभी जो आप अपने पार्टनर की step 1 in life, when you just entered, this could be the easiest exercise and the most difficult also. Make a picture of your partner sitting next to you in audio. हम आंख बंद करके सुनेंगे जब आप अपने पार्टनर. उनसे पूछो, favorite color पूछो, नाम का मतलब पूछो, क्या पसंद है, कैसे आते हो, height. I will not body shaming. मुझे एक बार क्लास में किसी ने बोला वो बहुत छोटा सा है. Find better ways of saying it. There are better words to describe height. There are better ways of describing weight. There are better ways of describing complexion, which is not bad, right? So I'll give you 5 minutes. It's 3:45 almost. We'll do some of you within like 5 minutes. इसमें तुम शोर कर सकते हो क्योंकि तुम एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी. Two of you. ऐसे करके 2 कर लो ना. It's not trio. It's duo. अच्छा जो 2 नहीं है, कोई है जो 2 नहीं है? 5 हाँ, so 2 of you are together. You write about yourself. Define yourself in 5 lines. Yes. Same goes. जहाँ 2 है हमको 2 करो. आप दो sorted हो. आप दो sorted हो. अच्छा आप में भी 3 है. Sir, you write about yourself. The girls can do like 2 each. हमें 3 लोग नहीं चाहिए इसमें. And what if you
You're not participating. This orientation is not for you, my child. It's for them. But you can still try. मैं तो हर क्लास के दिलाती हूँ, मुझे बड़े मजे आते हैं क्योंकि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कभी कोई एक आंसर दे, उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रिप्ट में थोड़े-थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। We're free to do that, right? That's how we learn. All right, who is willing to give it a shot? The lady in white wanted. Oh yes, yes. All right, silence, silence, silence. The two of you can also come here. It'll be nice. आ जाओ. Confidence. You know the first rule of mass comm, and I always tell my students, आप लोगों ने एक ऐसी फील्ड चुनी है जिसमें हर रोज आपको बहुत सारी तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। आप 3-4 गुड। तो ये शर्म आप बाहर छोड़ दो because nobody is judging you, even if it's bad script because there is no bad script. Who's coming सबसे पहले? Nice, I like. तभी तो नहीं बच्चे मिल रहे थे ना नेहा। You introduce yourself and you. पीछे रहना है तो रह लो, ऐसा नहीं है बैठ जाना वहाँ पर। तो मेरा नाम धनिष्ठा है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। So I'm a fresher too and today I'll be introducing you a person I met just now. She's a very beautiful person and her name is Sanya, which means the same. It has two meanings, Sham and beautiful, यानी कि सुंदर शाम। उसके बाद में अगर मैं इस इंसान के बारे में आपको बताऊं तो पहली चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि हम दोनों के इंटरेस्ट से मतलब we have a very favorite hobby which is like comedy, सोना। उसके बाद में I was like, हाँ sorry, सोना कौन सा वाला? sleeping वाला, ना एक ही सोना पसंद है सोना। दूसरे सोना के बीच में आई नहीं। वो सोचा ही नहीं है। Okay, so she loves music, dance. She's a guitarist also. So yeah, like finding people here in mass comm, like सब लोग बोलने में बहुत अच्छे हैं. तो हम तो सब extroverts हैं. We shared information in like 2 seconds or what, and now we are ready to go. We love to talk, we love to communicate, and like she's really friendly and smiley. You can see the bangs that they're very classy and stuff. But this is radio and we can't see. So technically, we're making a picture of however you describe, which is Yeah. good. Okay. So yeah, she's having bangs, a little flicks. Like she has a beautiful smile with specs of 4 numbers. So yeah. So I think it's nice. Now we got it. All right. What was plus? क्या plus था? Like अगर आप नहीं देख सकते, what's the good name? Ganesha and Sanya. Sanya का नाम explain किया. Maybe you know we could probably because the way she explained. Last में जो description दिया उससे क्या होता है? So the moment you explain somebody's features or the चश्मा or the बाल or the fringe, हम लोग एक picture बना लेते हैं. तो थोड़ा सा like for example if I'm saying you know अब अमिताभ बच्चन को मुझे explain करने की जरूरत नहीं है. The moment I say चलो एक riddle खेलते हैं, बताओ कौन सा actor was really tall and heavy voice and you say hi. And right? Sorted. एक लाइन में आंसर मिल जाएगा. एक हीरो है जो बात बोलते बोलते कई बार you know we'll say or maybe we'll just do a Kiran and you know it's Shahrukh. You know the point is we find those little nuances. कैसे खेलते हैं मेरे games? So we made a picture of her. So even if I don't know how Sanya looks, अब एक image बन गई है. क्योंकि बाकी चीजें जो है मास्को में वो सबका है. उसमें मैं कुछ याद नहीं रख पाऊंगी. But now maybe when you said it, हाँ मैं क्लास में spot कर सकती हूँ. कुछ लोग specs वाले हैं. Maybe this could be. Or they could be somebody like मेरी दोस्त जिसकी picture बन गई. Sanya, do you want to explain? Do you want to define how she looks or how she is? Hello everyone, well now you might know my name as my partner already said before. My name is Sanya Gupta, I am from Agra. So recently I met someone with a very beautiful white top, a very beautiful white top and short curly hair styled into a side good choti with round spectacles. And when I talked to her, oh my god, she's too confident for me. She's multi-talented, she knows everything. She has been a national basketball player, she knows dancing, she knows, I
I think she's multi-talented. I have nothing much to say. And her name is Ghanishta, which means someone very close to heart. So yeah, I guess. फ्यूचर में घनिष्ठ मित्र बनो. You know what happens with a script? आप पिक्चर बनाओ या ना बनाओ, आपको ये पता है कि मल्टी टैलेंटेड है. अगर ये ब्रेक ले अभी, फॉर एग्जांपल you're listening to her on the radio and she'll say अच्छा come back, I'll tell you more about Ghanishta. I would want to come back and hear. It was very simple, but because she was ये किया है. लेकिन I think maybe the way she was describing was so simple in little things that you want to come back and hear more. Because sometimes you also sort of smell a budding, beautiful friendship in coming years, which I could see, and I hope it does. So, thank you. But you know what I mean? We're making pictures. We're trying to make some pictures. Yes, who's coming? आप बैठ सकते हो? Hi everyone, this is Anna Mashti. So basically the person I'm describing is like, how many of you know Thumbelina? Anyone knows Thumbelina? Yeah, she's just like little Thumbelina with just this crazy personality, long hairs, and she has this big eyes in which you can like be cautious. You can get lost in her eyes. She's so attracted by that. Also, she's Chota Packet Bada Dhamaka. She's full of talent, and she is very beautiful as her favorite color. That's white. So that's all about her. If I'm telling you Chota Packet Bada Dhamaka, whenever you see a small lady roaming here and there and she's like full of confidence, it's her. So her name is very special, Kesar, as special as Kesar. So thank you so much. चलो फिर दोनों का सुन लेते हैं. Yeah, चलो ठीक है. What do you think was good that you will remember of how she explained Kesar and तो ये जिनको थंबलिना पता है उनके लिए तो वहीं पे स्टोरी ओवर. उनके लिए वो बन गया स्टोरी. जिनको शायद वो नहीं पता उनके लिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका, because we all will have a friend back home, in school, in our neighborhood, or probably you are the one of your group. So the moment we say छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हमेशा हमारे आसपास देखना एक ऐसा निकल ही आता है. और नहीं होगा तो you would be curious to know कि जिसको explain कर रही है वो कौन होगा, कल क्लास में मैं पकड़ूंगी उसको. But there are moments. There's one thing that Kesar. और इस बाहर जाते क्या चीज़ याद रही नाम की तरह, of course very very precious. Kesar. So you know 3 parts to her script. Obviously presentation वगैरह तो आप सीखोगे अभी लाइफ में, but still you know when I'm going, you'd remember Kesar for whatever reasons you, और यही reasons सबके अलग होते हैं. मुझको कौन सी मूवी आई है जो हमने देखी है? गदर 2 मैंने नहीं देखी, ओपनहाइमर देखी थी, उससे पहले रॉकी रानी फॉर एग्जाम्पल देखी है, कोई तो देखी होगी. रॉकी रानी, ओपनहाइमर, गदर 2 यार मुझे देखनी है. अच्छा कोई क्या हाथ उठाओ यार, 500 करोड़ का हमारा कंट्रीब्यूशन है. So we all, hello, it's not work for you. हमने देखी ओरिजिनल हॉल पे, हम पता है हॉल पे नहीं देखी हो भैया. The point is that we all find our own reasons, right? You liked Rocky Rani probably for Alia, you liked it for Ranveer, somebody would like it for the songs, somebody would like it for just the whole pomp and show, and somebody would just like it because it is Karan Johar's film and we wanted a full dole baja. We find our own reasons to like something. This, she's given you 3-4 different reasons to remember Kesar. I think it was very nicely done. Hi, my name is Kesar. I'm from Gurgaon. Actually, I'm describing a person right now who I met, I think, 3 months ago in a freshers GC, and I think I got attached to her like so really, itna closely कि I can't even describe her. And she's so pretty. Just look at her. She always wears that traditional clothes, and all. And I have never seen a girl always wearing a traditional clothes. And ठीक है, I think we can do it. Thank you. The traditional clothes for me was a winner, क्योंकि बाकी सारी चीजें बहुत generic थी. Like अगर मैं भी बोलूँ मेरे साथ मेरी दोस्त खड़ी है, she's very nice, she's very pretty, she talks a lot, she's very good in studies. तो ये बहुत generic है. The moment I say you'll always spot her with books in her hand. very famous right now. है ना? लेकिन रेडियो में मुझे दिख नहीं रही. लेकिन ethnic wear वाली जो बात बोली, उससे क्या होता है कि suddenly you know that there's a striking thing about this girl. Most of the times I will see her in ethnic. एक picture बन जाती है. अब वो picture सबकी अलग होगी. मेरे लिए ethnic शायद एक लहंगा होगा या एक सूट होगा या, but we all will have a different picture.
and that Dindi. Like Dindi for a lot of people is like that thing, कुछ नहीं बोलना. Like the moment I say which is the actress जिनको आप हमेशा साड़ी में सिंदूर में बिंदी में देखोगे. Picture बन गई, कुछ बोलना नहीं पड़ा. Thank you. Is there a fine gentleman who wants to try this before we move towards a closure? The lady wants to. आ जाओ यार, आ जाओ. ये बंदे बोलते क्यों नहीं है यार? हाँ? सब सौम्या. अब मुझे नाम याद है, सॉरी करना ही पड़ेगा. सौम्या and the friend हंस गई तुम. Good. Where's your partner though? She's not with me. It's okay. Okay, first of all, let me tell you all, I am a crazy RJ fan. I love your voice. I love the way you talk. Thank you so much. Thank you. So, I'm going to begin. I'm blushing. हेलो बेरेटियंस, आपका स्वागत है रेडियो मिर्ची 98.4 एफएम में. रेडियो मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश. आज मैं मिली एक लड़की से जिसके बाल है घुंघराले काले काले. नाम है उसका अलीजा अशरफ. जिस दिन मैं उससे मिली थी पहली बार, सोचा था मैंने कहीं हो तो नहीं गया मुझे इस दोस्त से प्यार. फिर मैंने सोचा हाँ, ये तो बड़ी जेन्युइन सी मालूम पड़ती है यार. फिर मैंने कुछ वक्त बिताया उसके साथ. आज वो डालकर आई है सफेद कुर्ता चश्मों के साथ और नीचे पहन रखा है उसने एक जीन्स समथिंग समथिंग. और मुझे बहुत खुशी है आप सबको ये बताने में कि बन गई है वो मेरी बहुत ही खास दोस्त. और जाने से पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी अपना फेवरेट गाना. She's already a popular one, ना मतलब ये आंसर दे रही है क्लास में. But see the thing is, you will remember her for a presentation क्योंकि it was different from others. Maybe because ये अभी एक आयोटा आगे बढ़ चुके हैं in terms of presentation. आप सब बराबर हो जाओगे. Her description was very normal क्योंकि अभी तक मुझे वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई, सब कुछ बड़ी नॉर्मल चीज है. तो मुझे सेड कि कर्ली बाल, चश्मा, कुर्ता एंड जीन समथिंग समथिंग. आपने एक पिक्चर बना लिया. हालांकि द पिक्चर इज आल्सो स्टिल वेरी जेनेरिक बट वी स्टार्टेड मेकिंग अ पिक्चर. एंड सिंस यू जस्ट 3 days old in this course, I think even if we are starting there, we're there. ये सब क्या कर रहे हैं, you know, we're only creating stories. And stories किस चीज से बनती है? Characters से. कुछ भी करोगे, like even if you're presenting news, if you're writing, tomorrow you start writing for projects, image, answers, कुछ ना कुछ create करने चाहिए. And especially in the world of radio podcasting, which is only about stories and moments and creating pictures, find creative ways of describing situations, places. मतलब हम दिल्ली को बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत किरदार है, वही सड़कें हैं, वही रोड है. But why do we say Delhi as a character? क्योंकि उसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं. सड़कें अलग हैं, कोने अलग हैं, कॉर्नर्स अलग हैं. पुरानी दिल्ली में बात करने का तरीका अलग, साउथ दिल्ली में अलग, वेस्ट दिल्ली में अलग है. साजा हिल्स एंड वेस्ट हिल्स. Easy. Why? Because वो character निकल के आ गया. I want the guy to come in and answer. Who's coming? लाओ confidence लाओ, जल्दी से आओ. किसी को बनना है इधर. आंसर देना है? आ जाओ चलो. What is wrong with you boys? I'll get a girl. Alright, let's keep this as the last. I would still hope. सौम्या तुम ready हो? सौम्या के friend सौम्या को describe करेंगे. I will decide on the teacher. You will describe him. After her. Hi guys, my name is Muskan Saxena and it'll be really hard to top what the girl before me did, but I'm gonna try. So the person I'm gonna describe today, she loves to talk. She loves to talk and she is so lively, just like her name, Zoya, which literally means life. Her eyes are a very special color. The color of chocolate, of hazelnut, of warmth, and of the coffee that she loves and enjoys the most. Oh, she has pixie cut hair with blonde highlights. She is beautiful all over. But when I say her hair, and her hair is literally the bomb. And I mean it because, wow, beautiful. And she has this ability to make you feel like you belong, which I find is the most attractive feature of her. Thank you. Okay, let me ask you, did we expect her to continue and say something more? Yes.
That's a win. Thank you. वो कई बार क्या होता है ना, स्क्रिप्ट की खासियत होती है कि ऐसी हो कि जब आप जो सुन रहे हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं, कटप्पा बाहुबली को जो मारा था उस पीक पे क्यों छोड़ी गई थी वो, because that was the peak. It made us wait for 1.5 years and it was a blockbuster. Why? वो point था. So you know, before we say how she described her, the fact is that वो उस point पे था जहाँ पे we wanted to hear more. और उसका सबसे बड़ा reason है because the presentation. I'm not saying it was like a perfect radio presentation, but story ऐसी सुनाई जाती है. Like मैं हमेशा बोलती हूँ क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, आने वाले 10 दिन नोटिस करना और फिर मुझे याद कर लेना. एक होगा जो अंदर आएगा बैग ऐसे खींचते हुए धीरे धीरे अभी क्लासेस में, जो लेट होगा हर रोज मेरी तरह, एंड वो आके बैग रखेगा, सॉरी मैम आज मैं आ रहा था एक पप्पी गाड़ी के आगे, तो मैंने उसको उठा के साइड पे रखा, तो मैं थोड़ा लेट हो गया. मैम ने लाइक ओके बैठो कोई बात नहीं. अब एक और होगा जो भागते हुए आएगा, सॉरी मैम आई वाज जस्ट पार्किंग द कार, आई कुड नॉट फाइंड अ पार्किंग, और बैठ जाएगा. इसकी स्टोरी में दम नहीं है, इसको सिर्फ पार्किंग नहीं मिली थी, लेकिन इसने उस पिक्चर को इतना बड़ा बना दिया और सुंदर बना दिया और इतनी एक्साइटमेंट डाल दी कि क्लास में भी सबको पता है ये ओवर एक्टर है, बट यू स्टिल हियर हिम और बार. एंड द अदर बॉय हु रियली हैड अ स्टोरी, probably, and I will not say he missed it, we probably thought कि ठीक है just because he could not deliver it. Like in both the cases, that's exactly what I would come to before I say bye bye to you. कुछ लोग स्टोरी प्रेजेंट करने में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोगों की स्टोरीज अपने में बहुत अच्छी होती है. And there will never be a greater or a worse or a lesser storyteller. कुछ लोग कहानी लिखेंगे, so मेरे रेडियो में सिर्फ मैं बोलती नहीं हूँ या पॉडकास्ट में, I can write also and I present also, but there are people who only write. And when I come on the show every morning at 11, I have a team that works with me. So tomorrow, 3 years later, 4 years later, once you start working, remember it's not just who speaks who matters. It will not be only Ranveer and Alia running the picture. The show is run by the editors, the directors, the crew, the camera, and lots more. In any profession. So even if you do your podcast, ये जो YouTubers हैं जिनको हम गाली भी देते हैं, फिर हम उन जैसा बनना भी चाहते हैं, it's a very tough task यार. Recording the same thing, even if it's a 30-second thing, making a setup. Why do they make a setup? हम कुकिंग शोज जब देखते हैं, उसमें वो कुकिंग के लिए इतना तामझाम क्यों करते हैं, जबकि घर की काली कढ़ाई में जिसमें मम्मी रोज खाना बनाती है उसमें बन सकता है. Why do we beautify it or give it a rustic look? Because we want our story to look perfect. So your story would always be your story. Somebody would cook एक गांव में खेतों के बीच में टूटे हुए खंडर में, कोई कुक करेगा 5-star होटल में. Your story would always be the way you run it. And with that I will close this. We have a long way to go. दोबारा मिलना होगा 3 साल में तो जरूर मिलेंगे. RJ Divya AA on Instagram. Insta time है. But listen to radio, read books, hear podcasts, meet friends, and like I said in the beginning, एक दूसरे को करेक्ट यहीं से करना है. प्रोनाउंसिएशंस, कोई तेज बोलता है, मैं बहुत तेज बोलती हूँ, मेरे बैचमेट्स आज भी जब मेरे को फोन करते हैं और मैं मुझे लगता है यार बहुत बिजी हूँ, तो वो आज भी मुझे बोलते हैं थोड़ा धीरे तो बोल. And then you know the thing is that they know my plus and my minus hasn't changed much. But thank you guys, thank you Bennett University, the teachers. It was lovely and I hope you stay as lovely. मेरे को नाम रिफ्रेश करने पड़ेंगे. कल का शो आप लोगों के नाम, कल यही पूछूंगी, नाम और नाम के लिए. Thank you guys. Bennett University to motivate our lecturers. Yes, I did. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now we would like to present a token of thanks to you. For that, we invite Mr. Sanjeev sir. वैसे ना चिराग ने मेरे को बहुत ही अच्छी एडवाइस दी थी जो मैं बोल नहीं पाई. तुमने बोला नहीं चिराग. मैम वो ना आपकी शो सुनता है और वो मेरे को मतलब ज्ञान दे रहा था. मैं सीनियर हूँ इसकी. अच्छा इतनी. I am an unfortunate junior of her. But I think seriously. So I wanted to say that life at times कभी-कभी थोड़ी hard हो जाती है. It becomes a bit stressful. जैसे इनका था कि मैथ्स में काफी लंबी लाइन थी, ये इनके लिए स्ट्रेस था. आप लोग के अंदर असाइनमेंट का स्ट्रेस हो सकता है, मार्क्स का स्ट्रेस हो सकता है.
आप लोग एक दूसरे से उधार ही लोगे, उसको वापस करने का भी स्ट्रेस हो सकता है. बट मेरी यही एडवाइस होगी कि रिलैक्स, टेक इट इजी. Can I just add in? I'm so sorry, but now that you mentioned, I will tell you why I named this. मेरे शो का नाम पहले 11 से 2 माँ बहन का शो था. For 8 hours. Yeah. And फिर जब मैं कुछ जरूर पढ़ती रही. And फिर जब कोविड वगैरह आया, तो I remember a caller called me, और we were like the only radio station. We had phone calls direct just at home. तो जो भी स्टूडियो नंबर पे कॉल आ रही थी, वो हमारे फोन्स पे दी जा रही थी. And Radio City was the only station at that point of time to have that phone connection. तो आप ये लगा लो कि क्वारंटीन सेंटर से कॉल्स आए हैं. जब मुझे यही पता था कि मैं इनको क्या बोलूँ, उसके बाद सेकंड वेव तो वाज लाइक सो बैड. हम क्या कर सकते थे, जो भी कर सकते थे किया. और उस टाइम एक बंदे ने मुझे फोन करके बोला था, कैन यू जस्ट गेट डन विद दिस मावेन, बिकॉज इस टाइम पे तुझे मावेन नहीं सुन रही, इस वक्त सब सुन रहे हैं. एंड आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू सम ऑफ अपनी लाइफ के क्राइसिस एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड देन आई लर्न वन थिंग इन 21 22 इस टाइम पे कोविड आया, दैट द ओनली थिंग दैट वी फॉरगॉटन, एंड स्पेशली व्हेन आई मीट स्टूडेंट्स, आप लोगों के माथों पे इतनी ज्यादा शिकन वाली लाइंस होती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कौन सा भाड़ लेके चल रहे हो यार. I mean, I always tell people you have to take it easy. ये मेरा तकिया कलाम था when my boss said let's just change everything, let's just call it take it easy with it. Because I think मेरे लिए ना वो affirmation होता है. So every day when I do a show, not that I can bring any change in your life, but when I say take it easy, I mean it. मैं अपनी life में I keep it easy because you just have to make peace with one thing in life. आप उड़ोगे नहीं जिंदगी में, आप steps ही लोगे एक एक. तो ये हो सकता है कि आज you have a question, we'll answer it. ये हो सकता है कि आप एक लॉन्ग जंप मारता होगा और कोई इंसान हुआ है जो एक बेबी स्टेप लेगा. दिस इज व्हाट माय सीनियर टोल्ड मी व्हेन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स गॉट प्लेस्ड आफ्टर एमसीआरसी एंड आई वाज लाइक मेरा जॉब नहीं है, मुझे रेडियो करना है. ही सेड कि 4 से 6 महीने हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे होंगे. टुडे आई एम वेरी प्राउड टू से ऑल माय बैचमेट्स हाउ वी ड्रीम्ड बैक इन आवर कॉलेजेस वर डूइंग एग्जैक्टली दैट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आई वांटेड टू डू रेडियो, आई एम हियर. My friend wanted to be an auto journalist, he's an auto journalist. The other one wanted to be a senior journalist, he's working with in politician, like this whole circle. But we all reached where we had to reach, only because there is no other way. तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा डिस्ट्रेस करो, टेक इट इजी. तो मैंने आप लोगों को देख के किया था, स्टूडेंट्स तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में देख रहे हैं. तुम अपने मम्मी पापा के सपने भैया 18 में पूरे नहीं करोगे, पहले तो इस चीज़ से वो कर लो. गिव योरसेल्फ 3 years 5 years, you will do what you have to do, but you have to give yourself that time. Study, mass comm is very very cool. There would be days when you think ये क्यों पढ़ रहे हैं, but I promise you 5 years later you also have an answer to that. Right? Thank you. Is there a question? Not a question, it's a request. I wanted to hear your radio show's intro line. वो तो गाया है एक सिंगर ने, वो मैं गाऊंगी तो तुम मेरे को ब्लॉक कर दोगे. No, I usually, so this is how I do the show. When in the morning I come, I always say कि alright guys, आज मेरी गाड़ी पंचर थी और मैं हमेशा की तरह फिर लेट आई हूँ. But the thing is, मैं तो यही बोलती हूँ, take it easy. मंत्रा जो आपको देती हूँ उसी को अपने पे अप्लाई किया है. I can't fly. So इसीलिए लेट सही, 2 गाने एक्स्ट्रा सही, मैं आ तो गई. देर आए तो रुस्ता है. That's my name. और हमेशा जाते हुए भी यही बोल के जाती हूँ कि एक take it easy मंत्रा यही है, हंसते रहो तो हंसते रहो, क्योंकि अगर हंसोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं. और रेडियो मिर्ची का स्कूल है, but listen, Radio City 91.1 11 बजे आज दिव्या. So you know there is no real rivalry in the world. Huh? Almost coming to an end, but Pratham has an announcement. For the students who Okay, so I just want to ask, how many of you dance? Come, everyone, come here. All the people who dance. Jaldi. Don't be shy. Why are you shy, guys? Jaldi, guys. Call that girl Sanya. Sanya, come. Come here, come. चल रहा है. Come, you stood up, come fast. No, come. Get up. Okay, those who did not come, I want you all to stand up. Stand up. Stand up? Come on, stand up. at least बात सुनो. Okay, stand up. सब खड़े हो जाओ एक से. ठीक है, तो अभी ना सबको छोटा सा any faculty who would like to join us. प्रथम, can you please come up? ठीक है, तो जिसको स्टेज पे आना वो आ सकते हैं. अभी हम ना थोड़ी फन एक्टिविटी करेंगे. सोशल मीडिया टीम कहाँ पे हो, रिकॉर्डिंग कर लो. ठीक है, तो सबने ये स्टेप कौन से डालेगा मुझे पता है. ठीक है, और एक
करके भी करना भी है सबको। So 1 2 3 तुम गा चलो। ठीक है, so everyone has to sing. गाना लगा दें क्या? Everybody will do it. पीछे चलो। So ready? 1 2 3 1 hands up. Down. Ding ding. Ding ding. Ding ding. Ding 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 ding. चलो I'll sing now. 1 2 3 go. बादल बरसा बिजुली सावन को पानी डांस गाइस चीसो मौसम छा सातो जवानी थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच यू विल also left रात को भी क्या नहीं तो मम्मी करके दिखाओ who wants to see him ये मैं बदला ले लूं मैंने पहले ही बोला था टीसो में रैगिंग नहीं होगी, ये रैगिंग करा है। बादल बरसा बिजुली सावन को पानी ऑडियो भी बेटर है। मौसम छा सातो जवानी so this is to tell you thank you everyone. I know I'm superb. I am right. Yes. Thank you. So this is here we come to an end of our program. But बैठ जाओ भाई बैठ जाओ. कोई ऐसा नहीं है. तो चिराग एक और बार हम रिमाइंड कर देते हैं जो उनको 28 अगस्त को करना है. So on 28th of August, we all will be going to a field trip to Nine office. For hostelers, kindly get your out passes prepared by today or tomorrow. And for day scholars, kindly be present at the gates by 9:30 a.m. sharp on Monday, 28th of August. Thank you. Yeah. And do not forget to join us tomorrow, same time, 9 a.m. And tomorrow is a fun day, guys. ये जो मैंने अभी किया ना बादल वैसे इससे भी बहुत कुछ हो रहा है guys और बहुत मजा आएगा. 10 o'clock. 10 o'clock आ जाना. 10 बोलेंगे ना तो they'll come so late. Don't you 9:30 पे. मैं बोलती जो लोग 10 को आएंगे, जो लोग 9 को आएंगे उनको मैं चॉकलेट दूंगी, ठीक है? और मैं कल आ नहीं रही हूँ. So ठीक है. Thank you so much everyone, each and every one of you for joining us, and I hope you had an amazing time with us. और जैसे हम seniors हैं तो we are always ready to help you. मैं तो ऐसे को busy रहती हूँ. मैं तो बहुत busy रहती हूँ. मेरा तो schedule ही tight है. But you know चिराग मैं बहुत बेला तो नहीं हूँ, but मैं हेल्प जरूर करूँगा। मेला ही है चिराग. if you see me just be like my name is Vidisha, just be like Vidisha. That's just fun. Thank you so much, and we come to an end. And Pratham has Everyone, thank you. Friends, please be seated. I need to share a few things with you. So, yes.